moving quickly towards our last session, that is fifth session. In every program, we used to have this special session of Dr. Rajendra Prasad, sir, Respiratory Pearls in Clinical Practice. For this, I would like to call Chairperson Dr. J.K. Mishra, sir, and Dr. V.P. Singh, sir, to please come on the dais, sir. Sorry, Commissioner. Presentation. Good evening to you all. Professor Rajendra Prasad sir needs no introduction, and he is known all over the country as well as वीडियो नहीं उसी में है other countries as a excellent chest physician. He is a teacher of teachers, and for us he is father of respiratory medicine, and I have no words for his introduction. And without wasting any time, I request you, sir, please start your presentations. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Mishra, for very nice introduction. At the outset, I wish to thank Dr. Pathak for organizing such a wonderful 10th, what you call it as Respiratory Conclave Conference. And although my time has already been over, I was supposed to speak between 9:40 and to 10 o'clock, but well, as it happens in most of the conferences, time is little delayed. So I will start with this Japanese proverb that better than 1,000 days of a diligent study, especially for the interns and the PGs, study in one day with a great teacher. I don't say I'm a great teacher, but for whom I said these words is my mentor, is Professor B.K. Khanna, who was a legendary, and I happens to work with him for more than 40 years. And so this word I have used for him. Why I have used these words for him? For you, it must be a story. I was in MBBS final year in 1973. He was professor and head department of TB and chest disease at that time. And he taught us, that there was one special short clinic which used to be held in KGMC. This was MCI plus. It was not recommended in MCI, but KGMC has innovated this. And final year students are supposed to attend those short clinic. अगर कोई KGMC का होगा तो शायद ही उसे याद हो. And he taught me in 1973, believe me, 1973, how to manage drug-resistant TB to MBBS final year students. So that was his beauty. You know, he died in 2018. 1 month before, I did a one national level CME on the drug-resistant TB, and he was the person who was the chief guest in that function in Era Medical College. And he asked me, he was sitting adjacent to me on the dais, asked me, Rajendra, क्या आया नया drug-resistant TB में? ऐसे ही बोला करते थे. मैंने कहा सर कुछ नहीं आया, जो आपने 73 में हमको MBBS में पढ़ाया था वही आज भी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में ब्रीफली पॉइंट्स वही हैं, नथिंग न्यू, ओनली फ्यू सम न्यू. उस वक्त तो कोई MDR XDR का नाम ही नहीं था ना. तो वो कितने, दैट्स व्हाई आई से 1 hour with great mentor, but I happens to work with him for more than 40 years. So I was very lucky to इनके डांट भी सहने के लिए, सब कुछ सहने के लिए. He was a very tough person, tough guy, and उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल काम था. Anyhow, these are my institute which I love to show, and this is currently where I am working.
And some of the pearls which I came across, I would like to share with you. Starting from simple one, that this gentleman, say 45-year male, was chronic smoker and had symptoms like hemoptysis, cough, usual respiratory symptoms. And this was the X-ray. कोई हमारा इंटर्न और को हमारा कहाँ गया वो पीजी, कहाँ गया भाई, क्या कहेगा भाई, क्या करेगा इसमें, देखो ना अभी तो हाँ हाँ फिर से पढ़ लो उसको. Right, very good. Right upper lobe में there is heterogeneous opacity. So naturally in India tuberculosis comes as a, अब हम लोग भी 40 साल 50 साल पढ़ाए हैं. Any shadow in the upper zones, TB you must think of. So CZ is 45. See the smoking history. Do you get some other idea apart from tuberculosis? Yes, it could be malignancy. How malignancy can produce shadow like this, heterogeneous type of shadow? अब भाई तुम्हारा वाई भाई हो रहा, तुम समझ लो डीएनबी का. नो 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 नो, माय क्वेश्चन देखो, इम्तिहान में ध्यान रखना. हम अभी रोज अभी कुछ दिन पहले मैंने एरा वालों को पढ़ा रहा था कि सुनो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ट्राई टू आंसर दैट. हमने क्या पूछा, why this heterogeneous shadow? Do you think this is a common shadow for malignancy, such type of shadows? And if it is there, how this shadow can occur? So there may be cavity, yes. So what I am trying to say, malignancy may also cavitate. There is no doubt about it. Anything else? Something like pneumonia-like shadow? How the pneumonia can be produced in a malignancy? So any idea? अरे आपके सर भी बैठे हुए हैं बगल में. और देखो तुम्हारे पिताजी बता रहे हैं क्योंकि पढ़े हुए हैं हमसे. So it could be something obstruction be creating distal pneumonitis, something like that. I mean, these are the possibilities. Anyhow, somebody gave him anti-tubercular drug. Obviously in India, time was 2001, very common disease. So, but when he finished with about, this was August 2001, and then after 2 months, what do you see? What do you see? क्या चेंज लग रहा 2 महीने में? आज तुम्हारा वाई भाई हो जा रहा स्वप्निल. कुछ समझ रहे, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं? रेजोल्यूशन तो नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा मतलब अगर हम कहें तो प्लस साइड में ही लग रहा. और क्या हो रहा? और क्या हो रहा? So there is a very good. There is a volume reduction. Usually people don't recognize these things. 45 plus, chronic smoker, 2 months of ATT not responding, and shadow is increased, and there is a more so there is a volume reduction. That speaks loud about the diagnosis at this stage. But unfortunately, doctor continued the ATT without realizing all these facts. And this was October. You know what has happened after about another 5 months? So he wanted to complete the ATT. And what has happened now, Swapnil? Now diagnosis is very obvious. क्या obvious है? What is the most
important investigation would you like to do at this stage? Not जो तुम दसियों को कराते हो, मैंने एक पूछा, आगे ये तुमने सारा पिक्चर देख लिया, अब वो 2 महीना 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद ये स्टोरी हो गई. अब सिंगल मोस्ट इन्वेस्टिगेशन विच कैन क्लिंच द डायग्नोसिस. दिस इज व्हाट पीपल अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट लोग सोचते हैं. ब्रांकोस्कोपी वुड हैव बीन डन ऑन द फर्स्ट ओकेजन. When sputum was negative, he was 45 plus, he was chronic smoker. Ideally, this should have been done at the first instance to exclude malignancy, because one of the common differential diagnoses in our country, I'm not talking of any western part of the world, but I'm talking of this country, this is very common. I have treated this patient, that's why, but he came to us with this X-ray. What I said in my initial remarks also, lung cancer is very late diagnosed because of the poor perception of by our doctors. So ultimately, you know, CT picture is, you can see there is a growth obstructing, even there is a fluid, something, and then what you see here? Metastasis in the liver. So bronchoscopy was done and that has shown obstructive lesion. So what I'm trying to say, this is day-to-day clinical practice. We see in and out in our clinical practice, but we suspect very late. My point of view is, I have taught all of my students like this, you think initially. जब वो 45 ईयर का आदमी आया, क्रॉनिक स्मोकर था, शैडो थी, स्पूटम वाज, अगर स्पूटम पॉजिटिव होता कुछ सोचना ही नहीं है. अगर पॉजिटिव में भी ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं सोचना है, दोनों डिजीज साथ भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि नहीं सोचना, बस ये आपने देखा और कर लिया, ठीक हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज थिंक लॉजिकली, थिंक अर्ली, सो दैट हम कहा करते थे 10 साल पहले, हम खाली रिकॉर्ड बनाते हैं. हमारे पास लंग कैंसर वो बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं वो काम किए हुए हैं हमारे संग. आई हैव मोर देन 3000 केसेस with me of bronchogenic carcinoma, what we did diagnose and treated with the help of other people of lung cancer. So that was ultimately diagnosed this. She was professor in KGMC, Department of Anesthesia. At the age of 63 years, she came with progressive breathlessness 1 month. So I think with only this symptomatology, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ो आप, believe me, she is still, now she is retired. When I was professor, she was also professor, senior than me. She came to me with this symptom. So what Rajadhar has talked about, very clearly he talked about a breathlessness of weeks, months time, progressively increasing. What should be the diagnosis? ILD. I also say, Raja, like you, probably easiest disease to diagnose in lung is the ILD. I say, you say, let me repeat, it takes about 30 seconds. What you said is, see the fingers, auscultate, take history. That's all. But time you take for to this, because ILD is a group of 300 diseases. It's not a single entity. Raja, I think, has shown very clearly. And so what time we take is to decide that out of those 300, what is the type of ILD. Otherwise, per se, ILD is a very simple disease. But believe me, she was a professor in medical college, like KGMC. I used to boost because I have been a student of that place. What treatment she was given, when she came to me, she was on inhaler. That was those days very fashionable to start inhaler for breathlessness. And she came to me कि सर मैं 3-4 महीना मेरा हो गया है, लेकिन मेरे को कुछ
आप तो कहते हो फायदा होने लगता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. दैट वॉज द कैच पॉइंट. एंड देन वी वेंट इनटू द हिस्ट्री डिटेल्स, एंड हिस्ट्री कोई लेता ही नहीं आजकल. सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मेरे एक केस में आएगा, वी आर फॉरगेटिंग हिस्ट्री. तो लिए ही नहीं किसी ने, डॉक्टर साहब से पूछा ही नहीं. शी वॉज herself a professor anesthesia. She gave, sir, I had adenocarcinoma colon. I was given oxaliplatin 5-FU leucovorin at that time for 6 cycles 4 months ago, and after that I developed this thing. And this was X-ray is also, in those days quality of X-ray was not digital, so you can see that something like some diffuse type of shadows you can see are visible. And then we got PFT done. उसको inhaler LABA, she was on LABA and ICS combination, right treatment, I must say, because she was a professor in medical college. तो जिसने भी इलाज लिखा उसने बढ़िया इलाज लिखा, लेकिन डायग्नोसिस सोच के कि अस्थमा है ये. Breathlessness means asthma. So and you see the PFT reports, it's not full, but what it shows is the ratio is maintained. क्यों भाई बताएगा तू? क्या बताएगा? बता. तेरे सर भी बैठे हैं बगल में. मुझे पीजी को पढ़ाने में बहुत मजा आता है. तो क्या कहेंगे इस सिंपल इस स्पायरोमीटर देख के क्या कहोगे? हैं? अरे यार उसमें लिखने की जरूरत है. डॉक्टर साहब जरा इसको जाके हड़काइएगा अपने यहाँ. हैं? तो फिर उसमें पूछने की क्या जरूरत है यार? आई ब्रॉट वेरी सिंपल केसेस. जानबूझ के मैं लाया हूं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिंपलेस्ट जो था मैंने लगा लिया. तो क्या बता रहा पीएफटी? यस, restrictive lung disease, obvious, it is not asthma. पहली बात ये, it is not asthma. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो अस्थमा तो है नहीं जो आप इलाज ले रही हैं, ये तो कुछ और है. तो then I went into, our PG went into details of the history, and this was the CT. Forgive me, that was the CT picture of that time, 2008. Now we have got guidelines how to do a CT scan in ILDs. अनफॉर्चुनेटली हम भी कहते हैं अपने अपने शहर में चेस्ट फिजिशियंस को बड़े स्ट्रांग होने पड़ेंगे रेडियोलॉजिस्ट को ठीक करने के लिए. हमने अपने शहर में ठीक कर लिया लखनऊ में. हमने कहा हम नहीं भेजते आपके पास until unless you comply with those guidelines. What is evidence based, we will not send CT scan. अभी हम जब डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो आपके पास हम पैसा खर्च करा के मतलब क्या? So I always say in every meeting, it is we who has to be very strict. And we have to work together so that radiologists cooperate and provides a good quality HRCT, which is really required to diagnose ILD. But at that time, this was very clear. I think Raja, she has like an IPF-like a picture, bilateral, basal, subpleural. Yeah. Yes. Some nodulity. It's not exactly UIP. It's more like sarcoidosis. Yes, it may be. You can find, sir, even some carcinomatous patients, you can find Sarcoidosis-like picture, right. developing sarcoidosis during this. So there was, very rightly Tomar, very rightly. So we thought two possibilities. Could it be secondaries further, although she has been operated and say she has given chemotherapy, everything, or else she was on chemotherapeutic drugs, so is it some drug-induced ILD? Some drug-induced ILD? So those were the two things in our mind. And yes, although the picture was not like sarcoidosis, because she has no other issues, she was a professor, तो ये दो हमने उस वक्त सोचा, या तो ये सेकेंडरीज हो रहा है शुरुआत में, लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस टाइप की पिक्चर जो आप कह रहे हैं ना, नोडुलर थिकनिंग, हाँ नोडुलर थिकनिंग एंड वो सब. सो विद दिस व्हाट वी डिड एंड वी रेड अ लॉट, भाई क्या कौन सी दवा इसमें कर सकती है. तो वी फाउंड दैट ILD due to oxaliplatin was there in the literature that it can cause,
and we used at that time steroids. डॉक्टर साहब बहुत, हाँ, और डॉक्टर साहब जो है बहुत ज़्यादा फेडअप थी कि भाई मेरे को ठीक होना है, स्टेरॉइड भी नहीं खाना। हमने कहा मैडम खाना तो पड़ेगा, अभी फिलहाल कोई ऐसी दवाएं नहीं है। What we were thinking, probably it is a drug-induced type of ILD. What is our impression at that time? Yes, yes. No, I will show you. But all the investigation of sarcoidosis we did. She is still in my follow-up. She is all right. And and you know, after few weeks of treatment, you find that पिछला एक्सरे कब का था? October 2008, and then after about 5 months of therapy, you know, the shadows has quite cleared, and even CT picture has become has cleared, and even PFT wise, स्वप्निल अब PFT क्या है? स्वप्निल अब PFT क्या है? Normal. So she improved in all the aspect. So what we thought at that time, Tomar, probably it is a drug-induced ILD, because it is known fact that drug, you know, not sometimes they can present like UIP, but that UIP is a treatable. That UIP is not that UIP of IPF. So luckily she is with us now. She has about 10 years old further, and she is okay. I keep her on follow-up. Now she appears to be okay, her CT, PFT and everything, and she is happy. So what I am trying to say, ILD is not very difficult to diagnose, very easy to diagnose, and see this, we took a lot of time to diagnose what is the type of ILD, and what we could probably explain that it was possibly a drug-induced ILD, because other investigations we thought of, and those investigations were normal. So there is another case, you read with me, 27-year female, had a symptom like TB, had a sputum positive, and I think that time it was 2018, although the gene expert has come, but it was not done at that time. So we were not, so that was the CT picture, you know, cavity-like picture. Sputum was positive. There is no question of, any doubt. So 6 months of ATT has made all clear. I happens to see at this stage, this was the CT clear. Patient was symptomatically improved, stopped. 9 months of therapy, that was stopped before me. Patient again came to me in 2021, 2 years back. And with the help of developed cough, developed cough and sputum again positive. CBNAT, culture, second line LPA, whole genome sequencing. She was very affluent lady. So मैंने कहा डॉक्टर साहब सब कराइए मेरा, मैं गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगी, अब मैं आप ही इलाज करो और सब जो जांच कराना कराओ. तो मैंने सारी जांचें उसको लिख दी. पेंडिंग द रिपोर्ट, टाइम तो थोड़ा लेता है. उसको मैंने कहा भाई पहली बार तुमको हुआ था, ठीक हो गई थी, फिर खाओ, जब तक रिपोर्ट आएगा तो देन विल चेंज एज यूजुअल. पहले ऐसे मरीजों को कैटेगरी 2 लिखा जाता था, अब तो नए गाइडलाइन में वही है कि सेम ट्रीटमेंट विल वर्क, you need not to change the treatment. So we put on the same treatment according to weight. And sputum AFB became negative. Sorry, मैं पीछे चला गया क्या? So this was the CT picture again, same place, literally cavitation and this thing. And you, to your surprise, this is the उसकी सारी रिपोर्टें हैं. बाय द वे टीबी जीनोम्स, मेरे को टाइम नहीं मिला, जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या कह रहा है. आई वाज अटैच्ड, आई एम एडवाइजर टू वन ऑफ द कंपनी हु वाज डूइंग जीनोम सीक्वेंसिंग इन दिस कंट्री.
उन्होंने कहा हम करा देते हैं फ्री आपका। हमने कहा करो भाई, देखता हूँ कैसा तुम्हारा है ये सब। रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस, तो एमडीआर तो है ही इसको, इथम्ब्यूटाल रेजिस्टेंस, पायराजिनामाइड रेजिस्टेंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस, सो एमडीआर तो है ही है। मॉक्सी प्री एक्सडीआर हो गया, ओफ्लॉक्सिन नीचे क्या मॉक्सी, तो गैटी, तो सारा अप टू प्री एक्सडीआर तक तो पहुंच गया। ब्यूटी ऑफ दिस जीन सीक्वेंसिंग, इन वन गो यू कैन नो एवरी ड्रग, अबाउट एवरी ड्रग, बट हाउ रिलायबल इज दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो एनी हाउ, और भी ड्रग्स में कैनामाइसिन और ड्रग्स के रेजिस्टेंस नहीं थे, बट इट वाज वेरी क्लियर नो ड्रग रेजिस्टेंस टू बीडाक्विलिन, क्लोफेजमिन, डिलामिनेट, प्रीटोमिनेट। सो इट डज ऑल द ड्रग्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। And then second line LPA, what it showed? It showed that smear was positive, fluoroquinolone sensitive. Now you see the disparity between the results. Kanamycin sensitive, this sensitive, this sensitive. So ये second line LPA है और injectable, तो इसके मतलब ये भी कह रहा pre XDR है. Second line LPA is also showing that this is a pre XDR. So this is a gene expert, also has shown rifampicin resistance. LPA1 probably report is not here, but it was done, and LPA2 also had shown resistance to, I have already shown. Phenotypic GST जो इसका हुआ, क्योंकि बहुत अमीर घर की थी, बोले साहब मेरा सब कराओ। मैंने कहा सब करा के लाए तो मैं भी चाहता हूँ सब तुम्हारा हो जाए, क्योंकि तुम्हारा दोबारा डिजीज आई है, तो देन वी हैव टू सी वेरी केयरफुली। एंड जीन सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट हुआ है। सो culture was positive, so was Mycobacterium tuberculosis complex, no other atypical, nothing like that. And that was, DST report was again, you see that isoniazid resistance, ofloxacin, pyrazinamide, rifampicin sensitive. मेरा माथा ठनका, मन का मैं क्या करूं अब इसको, लेकिन वो ट्रीटमेंट खा रही थी। So what I am trying to say, हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को खुदा समझते हैं। These are the gold standard investigation. मैं कोई छोटा मोटा और नॉट छोटे मोटे लैब, दे आर द बेस्ट लैब ऑफ द कंट्री। अभी जीन सिक्वेंसिंग ऐसे तो कोई करा, बड़ा अच्छा ही लैब कोई कर रहा होगा। So what I am trying to say with this case, that we are over relying on the investigation. कभी कभी मैं कहता हूँ don't treat investigation, treat patient as a whole. So see what has happened to this lady. Chest X-ray after 3 months, वो बीच में जैसा यूजुअल होता है 1 महीना गैप मार दिया। मैंने डाटा आगे बढ़े आते हो, यार तुम्हारा प्री एक्सडीआर टीबी तुम लिए कर रही हो, बाप को डाटा, उसके पिता को डाटा। हमने कहा बहुत गड़बड़ बीमारी है भाई, और तुम मेरे भी रेपुटेशन को स्टेक लगाने में बैठे हो, तुमको कहा था दिखाया करो रेगुलर, तो अब रेगुलर आती है इतना डांटने के बाद। बट सी सेज कि डॉक्टर साहब आप दवाई क्यों बदलोगे मेरा, हम तो बिल्कुल सही है, हमें कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे मिश्रा जी, हमने कहा बात तो सही कह रही हो यार, चलो नहीं बदलते, देखते हैं, लेट अस सी। लेकिन ये सोच लो तुम्हारे रिपोर्ट्स अदरवाइज हैं। आई एम ट्रीटिंग यू बिकॉज यू इम्प्रूव, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये नहीं तुम्हारे सिस्टम में नहीं इलाज चेंज, मतलब तुम्हारे, और तुम भी चाहती हो ये इलाज से मुझे फायदा, क्यों आप बदलेंगे सर? वो कह रहे हैं वो जाओ आप गवर्नमेंट में, वो दवाई अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट। बोले नहीं साहब हम तैयार हैं, आप करिए इलाज। लेट अस सी दिस, दिस इज 522, sputum became negative, fortunately, MTB culture became negative with those drugs, primary line of drug, what you call it. 9/8/22 को रिपोर्ट आई इसकी नेगेटिव की। Patient improved clinically despite the report, so it has been advised continue the same treatment. This is the latest X-ray, I think this month, 4th of this month, and CT picture also has drastically improved. What I am trying to say that sputum became negative, culture also became, second time became negative. And so what I'm trying to say with this case,
please don't treat investigator. I saw such type of cases in many of the conferences, 4 culture reports, different reports. So I always say, please, अपना भी दिमाग लगाओ कुछ. Don't take as a even a gold standard test में गोरा. मैं ये कहता हूँ, अगर हमसे और राजाधर से गलती हो सकती है, तोमर से हो सकती है, मिश्रा जी से हो सकती है, पाठक से हो सकती है, तो लैब वाले से गलती क्यों नहीं हो सकती? There are if and buts. So as a clinician we have to realize it. So that is I think last case. I may stop after this. है तो cases बहुत, लेकिन अब ये केस को देखो आप लोग, सबके देखने के लिए बहुत गौर से है. She was about 16-year-old boy, recurrent throat pain, but hemoptysis and epistaxis also. This was found on the detailed history, which is art is forgetting. On 12th March, he was a son of a मतलब STLS कहते हैं, जो डॉट सेंटर में काम करते हैं, उसका लड़का था ये, उसका पिता वहाँ एम्प्लॉय था. तो उसने कहा साहब मेरा ये आया जीन एक्सपर्ट, चूंकि अब जीन एक्सपर्ट क्या कह रहा है, MTB डिटेक्टेड लो, MTB डिटेक्टेड लो, माइंड इट, with rifampicin. RR means rifampicin resistance. So doctor there, without having any thought, they started all oral longer regimen. Consist of say all the drugs like levofloxacin, linezolid, bedaquiline. What is the regimen they started? Without thinking that what rule says, if MTB detected is low, then rifampicin resistance is a question mark. That too first timer. लेकिन कौन वहाँ अस्पतालों में कौन लगा रहा? What happened next? You see what happened? हाँ, yes, gene expert. It was gene. हाँ, गवर्नमेंट में gene expert ही हो रहा अभी. ये गवर्नमेंट में सब चीज हो रहा. After 20 days of taking ATT, he was a high school student, going to appear for board exam. उसको इतनी तकलीफें हो गई, उसका पिता ने जो कहा, मैं उस सेंटेंस, उसके माता पिता दोनों मेरे क्लिनिक पे है, और दोनों उनके आंसू नहीं रुक रहे थे कि साहब आई विल लास्ट माय सन. जिस तरह इसको तकलीफें हो रही हैं, सब तरह की ड्रग इंटॉलरेंस. तो मैंने कहा भाई को बेसिक रूल, भाई हमने कहा यार तुम तो टीबी क्लिनिक पर काम करते हो. बोले हाँ साहब हम तो हमने कहा तुम हमारे पास कैसे पहुँचे? बोले साहब उन्हीं लोगों ने कहा कि एक बार जरा सर से भैया पूछाओ, बहुत पढ़ाते रहते हैं, देखें क्या हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा. हमने भाई तो ड्रग इंटॉलरेंस, मोटी सी बात है, फर्स्ट इट इज ए ड्रग इंटॉलरेंस. रूल सेज दैट इफ एनी पेशेंट इज नॉट टॉलरेटिंग ड्रग, स्टॉप फॉर सम टाइम. कौन सा पहाड़ टूट जाएगा भाई? उन्होंने कहा साहब डॉक्टर लोगों ने मना किया. सुन भाई स्वप्निल, तू डॉक्टर लोगों ने मना कि तू नए जनरेशन का डॉक्टर, इसलिए तेरे को बार बार नजर ले रहा हूँ. तो क्या पहाड़ टूट जाएगा 7 दिन अगर दवाई उसने बंद कर दिया तो? रोज ही बंद करते रहते हैं कभी कभी. When drug has become poison, you have to stop it. So मैंने रोक दिया. रोकने के बाद अगली बार जब उसके माता पिता आए तो बहुत खुश आए, चेहरे से पता लग गया इसकी सारी तकलीफें तो दूर हो गई. आई पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा. इसमें एक मरीज का मैं वो चल रहा, नीचे है कोई चलाने वाला, इधर से यार हमको तो दिख नहीं रहा. इसको सुनो मरीज का क्या कह रहा है. ये वाला दबाओ, चलना चाहिए. हाँ, आवाज नहीं आ रही उसमें, मैं सुना देता हूँ वो क्या मरीज कह रहा है. साहब आवाज क्यों नहीं आ रही? यहाँ बहुत हल्के हमको सुना. कह रहा है कि डॉक्टर साहब ने कुछ पूछा ही नहीं सर, कोई बात ही नहीं हुई, वह खाली रिपोर्ट देखी और दवाई चालू कर दी. पहले जिन डॉक्टर साहब मैंने अच्छा भाई कोई बात नहीं, बातचीत फिलहाल दवाई बंद करो. मैंने बंद किया, ही इम्प्रूव्ड अ लॉट. कुछ आराम हुआ नहीं है. तो मैंने कहा आर वी फॉरगेटिंग द आर्ट एंड साइंस ऑफ हिस्ट्री टेकिंग. सो आई वाज कंपेल्ड टू पुट अ यूट्यूब लेक्चर ऑन हाउ टू टेक हिस्ट्री. एंड देन LPA, second line LPA not detected. ATT was stopped due to adverse drug reaction.
all those drugs, sputum smear was negative, TB whole genome shows no growth. तो इस स्वप्निल इसमें टीबी कहाँ है? हैं? मोबाइल ज्यादा देख रहा है? तुम्हारे माता पिता दोनों सुन रहे हैं, बहन भी सुन रही है। सो देखो ना, होल जीनोम सीक्वेंसिंग में नेगेटिव आ गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था? मैंने उसकी दवाई, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट है, WHO suggests that repeat gene expert when MTB is detected low। ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ हर गाइडलाइन में, लेकिन कौन कर रहा? कोई नहीं करता। बस जैसे ही हुआ तुरंत दवाई उसको मिल गई। सो एनी हाउ दिस पेशेंट वाज, दिस इज द 22, इवन आई गॉट CT स्कैन डन। हमने कहा भाई क्या कहीं गलती हो, कहीं छुपा हुआ TB हो, तो भाई हमारे पास आके हम दवा बंद कर दें तो बड़ी बदनामी होगी मेरी भी, हैं? So I was very aware about these things, so I got CT scan done. CT में हमें कुछ नहीं मिला, ATT was discontinued, patient was managed symptomatically, चूँकि उसको upper respiratory tract के symptoms थे, वो किसी डॉक्टर ने पूछा ही नहीं। So this patient cause of false positive I'll not discuss, बहुत से हैं। PNS was done, got an ENT consultant of a very famous professor in KGMC, and he said that there is something in there, otherwise nothing is there. So no TB. What I am trying to say, इस मरीज को TB ही नहीं थी। डॉक्टर साहब सुन रहे हो? आप ही से कह रहा हूँ भाई, चेस्ट वाले बहुत बैठे हैं यहाँ पे, TB ही नहीं थी। So please take care of all those issues. Ultimately तो बदनामी तो हम ही लोगों की होती ना। In fact, there was no tuberculosis. So मैंने कहा भाई बंद हो जा। आज भी माता पिता हर 3 महीने में मेरे पास आते हैं, बहुत खुश, पैर छू के जाते हैं, कहा साहब आपने जान बचा लिया, आपने दवाई भी रोक दी। हमने कहा डॉक्टर साहब जाके बताना भाई कोई ऐसी बात है नहीं, तो इसलिए दवाई अब रोक दी। हो सकता है कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। सो आई थिंक आई विल स्किप, आई कैन स्किप। क्यों भाई, बहुत समय हो रहा ना? हाँ, तो आई सम टाइम नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल प्रेजेंट, देयर आर मेनी केसेस बट आई विल स्किप। एंड ये तो आयरिस का केस था, लेकिन अब कभी करेंगे। एक और प्रॉब्लम हो रही है, मैं छोटा सा बता दूं, बहुत क्विकली बता दूं। ये देखो, ये लड़की थी लगभग यार इसकी हिस्ट्री है। This was a girl, young girl, started with some lymph node in axilla, abscess, and that was investigated. Nobody investigated chest. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर एक्जिला में लिम्फ नोड मिल गया, हमारे भाई लोग चेस्ट एक्सरे कराते ही नहीं। हम लोग साल भर 50 साल पढ़ाए हैं, इफ देयर इज एनी साइट ट्यूबरकुलोसिस गेट चेस्ट एक्सरे डन। तो मैंने कराया, तो मैंने कहा तुम्हारे तो मीडियास्नल लिम्फ नोड भी है। तो यू सी मल्टीपल मीडियास्नल लिम्फ नोड्स, एंड देन उसके बाद वो बीच में 2021 में उसको क्या हुआ, आई सो क्विकली, उसको थोड़ा सा प्लूरल डिजीज भी आई। तो शुरू हुआ एक्जिला लिम्फ नोड से, फिर मीडियास्नल लिम्फ नोड, फिर प्लूरल डिजीज, और अल्टीमेटली क्या हुआ इसको, एक दिन ये बेहोश हो गई। लड़की थी अबाउट 7-8 years, यंग गर्ल, एंड शी डेवलप ट्यूबरकुलोमा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास हमने भेजा, हमने जांच दिखा के, भाई क्या हो रहा है ये सब, तो मुझे तो then we were of suspicion whether it is a drug resistance or iris. Probably it was part of iris, because I am still treating this young girl, and she responded. Even you see even the lymph node size has regressed, pleural, and even the tuberculoma has also vanished. So this, and we treated with the same drug. We have not changed the drug. So you need to have a courage. हम क्या देख रहे हैं, जल्दी से MDR का इलाज लिख देते हैं। So you need to have a courage. This was a case of iris, not the drug resistance. But you have to be fully aware about this and then treat. With this, my concluding thoughts have come. I have already said this sentence. I am very fond of saying this sentence. Do not treat investigation. जब मैं PGI में जाता हूँ तो ये सेंटेंस जरूर बोल के आता हूँ। SGPGI में भाई मेरे दोस्तों,
मित्रों, अब तो मित्रों ही कहता हूँ, भाई इन्वेस्टिगेशन का मत इलाज करो, मरीज का इलाज करो. So I take patient as a whole, then you will be probably a better clinician, more famous clinician in your area. And then finally don't be, and I have shown you all sorts of investigation, and this teaching I am taking in MBBS KGMC for last 40 years. Don't, सारे लड़के याद हैं जो हमारे से पढ़े हुए, क्यों भाई कहाँ गए डॉक्टर साहब, आपने क्या शार्ट क्लिनिक अटेंड करी थी जब आपने एमडी किया था? हमारे एमडी स्टूडेंट भी वो शार्ट क्लिनिक एमबीबीएस वाला अटेंड करते थे, पाठक ने भी अटेंड करी होगी. तो हम लोग यही कहते थे, ये सेंटेंस तुम्हारा बहुत पुराना है, डोंट बी डिक्टेटेड बाय एनी इन्वेस्टिगेशन. यू हैव सीन जीन सीक्वेंसिंग, LPA 1, 2, जीन एक्सपर्ट, एवरीथिंग मे गो रॉन्ग. What I am trying to say. So, with those, I say don't be dictated by any investigation. I can talk hours and hours with all the cases I have with me. मेरी थोड़ी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छी है, समझिए, शुरू से ही तो मैं रखता हूँ उन सबों को. So I can talk on this subject. And I say don't be dictated. Take them together. सब चीज मिलाओ, मरीज से बात भी करो, हिस्ट्री भी लो, तब फिर इलाज लिखो. You will be better clinician. एक डॉक्टर साहब, एक मैं अभी लखनऊ में एक मैं चेयर कर रहा था डॉक्टर साहब, मैं यही सेंटेंस बोला कि क्या बोला, मैं रिपीट करूँ यहाँ, कि पहले के जो हमारे टीचर्स थे वो बातें ज़्यादा करते थे. बातें ज़्यादा करने का मतलब they used to take history very properly और number of drugs used to be very less. हमें याद है मेडिसिन का हेड 2 दवाई लिखता था. अब कौन सा मिलेगा मेडिसिन वाले हैं तो गए. अब कौन डॉक्टर मिलेगा जो 1 या 2 दवाई लिखे? भाई हमारे टीचर तो लिखते थे. सो व्हाट आई से, दे यूज्ड टू टॉक मोर, लेस नंबर. उसी वक्त मेरे को चेयर था, भानु मेरा को चेयर था, बोले सर एक पर्चा देख लीजिए, 31 ड्रग्स on 1 prescription. I'll not name doctor, he was a very super qualified one. Gawar nahi? So what I'm trying to say, please think of the patient, take history, do physical examination, take help of investigation if it is desired, and then decide what is your patient and how you are going to treat. With this, I think with this, हमने एक नया हम पर शौक आया है बहुत साल पहले से कि YouTube पे मेरे लेक्चर्स बहुत हैं. ये मेरे PG स्टूडेंट ने मुझे प्रेरित किया. Some of the students who are now DG and the directors, they are my Facebook friends. तो उन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब मिश्रा जी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो MBBS में हम लोगों को एक्सरे पढ़ाया करते थे वो है कहाँ? तो हमने जवाब दिया वो सब रखे हुए हैं भाई. बोले सर वो रखे ना रखिए, उसको put on some tube or some book. So what I have a lot of lectures on my YouTube. This is the one lecture I put on while teaching MBBS student. More than lakh people have seen, I think. And this is another lecture which I was taken to the again era UG student. I was very fond of teaching X-rays. So at that I think how many views? 253 के यानी 2.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. Believe me, Tomar, this lecture, one of the era's center is in Barbados. When there are 4 or 5 students come every year for exposure. So I teach them X-ray, and that was recorded, and that was put on the YouTube, maybe about a year ago. And so what I am trying to say, we have a lot of, I have this fond of putting lecture on auscultation for 1.5 hours, how to read chest X-ray, testing, and lot of books. I will not bore you. And with their saying, now I am coming with Rajadhar, with their demand, great demand of my old students. उन्होंने कहा साहब आप किताब भी लिख डालिए. So I was working on it for last 1.5 years. And this book is going to be released very soon. This will be, because you know, X-ray की रीड, जैसे हिस्ट्री रीडिंग की कला खत्म हो जा रही है, वैसे X-ray रीडिंग की भी कला खत्म हो रही है. So this book will be in 2 volumes and it will be released. It is already been completed and released. I think with these words,
I would like to end my lecture by saying this. ये आप सबके लिए, बच्चों के लिए जो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, आप लोग अभी जवान हो, हम लोग थोड़ा सा, हम और मिश्रा जी थोड़े, हम तो खैर मिश्रा जी से भी बड़े हैं, ये हम लोगों के लिए है, सब आपके लिए भी है। और ना पढ़ो किसी के लिए, मैं मोस्टली वीसीस को जब एड्रेस करता हूँ कभी कभी, तो कहता हूँ भाई ये यूज़ क्या करो, तुम्हारे स्टूडेंट लोग बंक नहीं करेंगे। स्वप्निल हंस रहा है, खूब क्लास इसने बंक किए होंगे, समझ गए हैं? बिकॉज बंकिंग इज अ न्यू फिनोमेना, इन आवर टाइम इट वाज नॉट देयर। सो हम कहते हैं भाई एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग, दैट्स व्हाई इन द एंड आई से in my slides which people like, I am still learning. Thank you very much. Thank you. Thank you, dear Dr. Pathak, for giving me this opportunity to share some of my thoughts about interesting pearls. Thank you very much. So, not taking your so much time, I would like to call Dr. J.K. Mishra sir to present memento and Angvastram to Dr. Rajendra Prasad sir. एक बार फिर से सर। सर आपको 100 भी मिले तब भी कम है सर। अभी हम लोग को गोल्डन जुबली मनाना है ना रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव का, तभी। Would like to call Dr. Sanjay sir also to present memento to Dr. VP Singh sir. Would like to call Dr. Sanjay sir. Dr. VP Singh sir. Would like to call Dr. S.K. Pathak sir to present memento to Dr. J.K. Mishra sir. Thank you very much, sir. Dr. S.K. Pathak sir to Dr. Sanjay sir. Token of thanks. And would like to call all entire team of Respiratory Conclave Conference to please come inside. सबको बुलाइए. Entire team of Respiratory Conclave Conference coordinating team. अभिषेक तिवारी उसको बुलाओ, सबको, सारे एंटायर टीम को. डॉक्टर अंशु मित्तल सर to Dr. Saurabh sir, breathe easy. अभिषेक एक साथ 5-6 पीस ले लो.
Dr. Robin Dubey sir, chest physician, Varanasi. Most handsome doctor of Varanasi. और पूरी टीम को बुला लो ना. एक बार सारे स्पीकर्स को बुला लेते हैं सर, सारे फैकल्टी टीम को एक साथ कंबाइन फोटो. अभिषेक तिवारी थोड़ा साइड हो जाओ, सर को वो आगे आने दो. सर 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 खड़े रहिए. सर वो तार इतना ज्यादा लगा.